Definite integration. Okay, everyone please pay attention. Okay, today we are going to do majority of the types of indefinite integration, but along with limits. The only difference in definite and indefinite integration is indefinite has a constant in your answer, that is plus c. Definite integration में plus c नहीं आता है. Okay, now let's start with a simple example. Okay, say for example my question is I is equal to integration 1 to 2 x dx. I'll solve it by normal integration. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x square by 2 from 1 to 2, which will become up. This is the answer. Now what do I do is, in the entire answer I will put upper limit, minus in the entire answer I will put lower limit. So this will become 2, I'll write it like this, 4 minus 1 by 2, that is equal to 3 by 2. So what I have done is, guys, in the entire answer I have substituted upper limit, and in the entire answer I have substituted lower limit. And since I have got upper limit and lower limit, all I had to do is I'll just have to substitute the values and I'll get the answer. Okay. Now, say for example, I have a question. I is equal to integration 0 to pi by 4 tan square x dx. Okay, we have taken an algebraic term, I have taken a trigonometric term. We know that there is no integration for tan square x. So I'll convert it into sec square x minus 1 dx is equal to 0 to pi by 4 sec square x dx minus 0 to pi by 4 1 dx. Integration of sec square x is tan x minus x from 0 to pi by 4. इसका मतलब है पूरे आंसर में आई विल पुट अपर लिमिट, पूरे आंसर में आई विल पुट अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में आई विल पुट लोअर लिमिट. So my answer is 1 minus pi by 4. This is what we are doing, guys. We are not doing anything extraordinary. We are solving it by integration, and पूरे आंसर में I will put upper limit minus पूरे आंसर में I will put lower limit. That's it. Now, find alpha if 3x square plus 2x plus alpha dx from 0 to 1. Okay, find alpha if 3x square is equal to 0. So what I am going to do is, सबको अलग अलग लिमिट डालने से अच्छा आई विल इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस अल्फा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स फ्रॉम 0 to 1 is equal to 0. So this will become 3x cube by 3 plus 2x square by 2 plus alpha x from 0 to 1 is equal to 0. Okay, 3x square plus 2x. Now what I'll do is I'll cancel again. Okay, in the entire answer I will put upper limit, and in the entire answer I will put lower limit. Since I put upper limit, this will become 1 plus alpha minus 0 plus 0 plus 0 is equal to 0. 2 plus alpha is equal to 0. Alpha is equal to minus 2. So we're just doing basic integration of definite integration by just substituting the values.
integration a to b x cube dx is equal to 0 and integration a to b x square dx is equal to 2 by 3. Now guys, I know that I have to find the value of a and b. Very important question, very nice question. I'll start with this. Okay, I'll start with this here. देखो क्या दिया, x cube का integration will become x raised to 4 by 4 from a to b is equal to 0. यहाँ पे देखो क्या दिया, x cube by 3 from a to b is equal to 2 by 3. Okay, I'm doing it parallel. इसमें I will put पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट अपॉन 4 is equal to 0. So b raised to 4 minus a raised to 4 is equal to 0. So b raised to 4 is equal to a raised to 4. So b is equal to plus minus a. Okay, b is equal to plus minus a. I've got b is equal to plus minus a. Now, if I substitute here, this will become b cube minus a cube by 3 is equal to 2 by 3. ये देखो निकल गया, basic integration. Now, if I substitute b का value as a, if b is equal to a, if I substitute b is equal to a, I will get 0 is equal to 2, which is not possible. Because I successfully proved that 0 is equal to 2. ये possible ही नहीं है. मतलब I cannot take b का value as a. So I will take the next condition. I will take b is equal to minus a. And since I have taken b is equal to minus a, this will become minus a cube is equal to 2 minus 2a cube is equal to 2. So a cube is equal to minus 1, therefore a is equal to minus 1. And guys, if a is equal to minus 1, ये देखो ये condition है. If a is minus 1, b will become 1. Did you guys understand this? Very basic understanding of the question. No type, nothing. We just integrated it. I got two values. One value है substitute, नहीं आंसर है, 0 is equal to 2 आया, not possible in mathematics. LHS और RHS equal होना चाहिए. Second में I have got b is equal to minus a. Anybody has any doubts here? No. Let's start with a type. Okay. Say for example, my question is this. I is equal to integration dx 4 plus x minus x square. Okay. 0 to 2. I can clearly see this. This is 1 upon quadratic. In the type 1 upon quadratic, my first rule is the coefficient of x square should be 1. Here I can clearly see that the coefficient of x square is minus 1. Step number 1. I'll take minus outside. 0 to 2 लिख दिया. ये जगह dx. This will become x square minus x minus 4. Next is last term. To find the last term, my formula is middle term the whole square into 1 upon 4 into first term. So this will become x square into 1 upon 4x square. This gets cancelled and my answer becomes 1 by 4. ये हो गया मेरा middle term. ठीक है, last term मिल गया. So I'll take I is equal to minus 0 to 2 dx upon x square minus x plus 1 by 4 minus 4 minus 1 by 4. ठीक है, what I've done is I've added and subtracted 1 by 4. Since I've added and subtracted 1 by 4, now look at this. Okay, I'm going to write it in bracket. So this becomes minus integration 0 to 2 dx upon x square minus x plus 1 by 4 minus 17 by 4. Now I'm going to write it as a perfect square, which is minus integration 0 to 2
dx upon x minus 1 by 2 the whole square minus root 17 by 2 the whole square. I'll take minus inside. So this will become integration 0 to 2 dx upon root of 17 by 2 minus x minus 1 by 2 the whole square. 1 upon a square minus x square. The formula for 1 upon a square minus x square is 1 upon 2a. Now remember this. ये पूरा चीज़ आएगा from 0 to 2. And since the entire term has come from 0 to 2, once I simplify this, देखो 8 to 2 निकल गया. I'll simplify this first, okay, for my understanding. It's very important for me to simplify this. It's very important for me to simplify this. Okay, now see this. Once I simplify this, इसको एक ही ब्रैकेट में डाल दिया 1 upon root 17 ln mod of this will become root 17 plus x minus 1 upon root 17 minus x plus 1, and this is going to be from 0 to 2. Since this is going to be from 0 to 2, पूरे आंसर में I will put upper limit. टू एक्स root 17 plus 2x minus 1 root 17 plus 2x plus 1 from 0 to 2. ठीक है, this is from 0 to 2. अब पूरे आंसर में I'll put upper limit. So this will become, जैसे मैंने upper limit डाल दिया, this will become 1 by root 17 ln root 17 plus 4 minus 1 upon root 17 plus 4 plus 1 minus 1 by root 17 और नीचे 0 आ जाएगा ln root 17 plus 0 minus 1 upon root 17 plus 0 plus 1. ठीक है, and now I'll simplify this. 1 by root 17, this will become ln, I can solve this as root 17 plus 3 upon root 17 plus 5 minus 1 by root 17 ln root 17 minus 1 upon root 17 plus 1. Now if you leave it here, perfect. You want to multiply, that's up to you. Okay, you can leave it here, that's not a problem, and you will get the same answer. इसके बाद अगर तुमको कॉमन लेके log a माइनस log b करना है, you can do that, multiply हो जाएगा and you can simplify. Depending on what has been asked, this is going to be answer. So the first type, okay, we have not done substitution yet. I will be doing substitution, but I started with 1 upon quadratic, just में substitution नहीं use हो गया. I've done 1 upon quadratic till here, we have done normally. इसके बाद आता है definite. पूरे see remember this, whenever you get confused, कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर है पूरे आंसर में अपर लिमिट डालो माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट डालो. That's it. This is the only thing that you are supposed to understand. Now since you have done this, okay, let's take a question of 1 upon root quadratic. Okay, since you have done root quadratic, let's take a question of I is equal to integration 0 to 1 0 to 4 dx upon under root of x square plus 2x plus 3. X square plus 2x plus 3. Now please pay attention. I can clearly see that this is 1 upon quadratic. Is the coefficient of x square 1? Yes. The first step is taken care of. Let's find the last term. Last term is middle term the whole square into 1 upon 4 into first term. So this is 1. So what I can directly do is 0 to 2 ले लिया, यहाँ पे 0 to 4 ले लिया.
dx अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2. मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया, एंड जैसे ही मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया, दिस विल बिकम 0 to 4 dx अंडर रूट ऑफ x plus 1 the whole square plus root 2 square. Okay, what I have done is x plus 1 the whole square plus root 2 square कर दिया. जैसे मैंने x plus 1, तो this is under root of a square plus x square. The formula for under root of x square, a plus square plus x square is ln x plus under root of x square plus a square. ये plus c, ये for definite indefinite integration, ये definite है. So all I'll do is ln mod x is x plus 1, x plus 1 plus under root of x plus 1 the whole square plus root 2 square from 0 to 4. If I simplify it, this will become x plus 1 plus root of x square plus 2x plus 3 from 0 to 4. Now पूरे आंसर में I will put upper limit. Okay, ये एक्सप्रेशन को ब्रैकेट बना दो ऐसा. So पूरे आंसर में I will put upper limit. तो ln this will become 4 plus 1 plus under root of 4 square plus 2 into 4 plus 3 minus ln lower limit will become x is 0, 0 plus 1 plus under root of 0 plus 0 plus 3, and this will become ln 5 plus 16 plus 8 is 24 plus 3 is 27, root 27 minus ln mod of 1 plus root 3. If you want to subtract, you can rationalize depending on what has been asked. So you can simplify it further. And this is how we do 1 upon quadratic. ठीक है, बोल. उसको जो नीचे है उसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते रूट अपॉन लेफ्ट साइड इसका हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. नो नो सो दैट स्क्वायर ना सो दैट रूट आल्सो वी कांट रिमूव इसका क्या स्क्वायर रहेगा? x square plus 2 x square plus 2x plus 1. ओके हाँ नेक्स्ट सर एंड यहाँ पे 2 into 4 plus 3 है वो कहाँ गया? व्हाट इज 4 स्क्वायर प्लस 8 कितना होता है? 17 18 19 20 21 22 23 24 8 हो गया. 24 प्लस 3 कितना होएगा? 27. क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है ना, ध्यान से देखना थोड़ा. Now we have done 1 upon quadratic and 1 upon root quadratic. A very important type, very important for your understanding. We without using substitution we have done this. Now if I have to solve a sum of integration by parts, okay, I'll write the formula. Integration uv dx is equal to u integration v dx minus integration of integration v dx into derivative of u dx. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u dx. हमको याद है कि हमने ये यूज किया था LIAT, log, inverse, algebraic, trigonometric and exponential every time. Now let's take a sum. जहाँ पे I will take 0 to pi by 2 x cos x. चलो इजी क्वेश्चन लेते हैं. I is equal to 0 to pi by 2 x cos x dx. इतना ज़्यादा इंटीग्रेशन है तो हर जगह लिमिट लिखने का जरूरत नहीं. आई प्रोवाइड यू विथ द ट्रिक. ये ब्रैकेट डाल दिया, नॉर्मली सॉल्व करो. आई नो दैट दिस इज एल्जेब्रिक, दैट इज यू, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक वी. पहले एल्जेब्रिक आते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आते हैं. आई राइट द फॉर्मूला यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू. ये क्लोज डी एक्स. अब देखो क्या करेंगे, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे लिमिट डाल दो 0 to pi by 2. पूरा सिंप्लीफाई करो, लास्ट में पूरे आंसर में अपर लिमिट और लोअर लिमिट. अगर हर जगह डालेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा. नाउ इफ आई सिंप्लीफाई दिस,
Integration of cos x is sin x minus integration sin x dx 0 to pi by 2, and this will become x sin x plus cos x from 0 to pi by 2. आप कुछ नहीं करना है, पूरे आंसर में आई विल पुट अपर लिमिट. सो पाई बाई 2 sin pi by 2 plus cos pi by 2 minus 0 into sin 0 plus cos 0. And if I substitute further, if I have to solve this further, if I solve this further, ये हो जाएगा pi by 2 plus 0 minus 1. My answer is pi by 2 minus 1. This is integration by parts. Since we have done integration by parts, 1 upon quadratic, 1 upon root quadratic हो गया. Let's take a question of partial fraction. Okay, partial fraction revise करेंगे. I is equal to integration 1 to 2 dx upon x plus 1 x plus 2. A clear example of non-repeated linear factor. Since this is non-repeated linear factor, type 1 of partial fraction, non-repeated linear factor, कुछ नहीं करना. I will write 1 upon x plus 1 x plus 2 is equal to a upon x plus 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2. जैसे मैंने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1. इफ आई पुट x का वैल्यू एज माइनस 2, आई विल गेट 1 इज इक्वल टू माइनस b. एंड इफ आई पुट x इज इक्वल टू माइनस 1, 1 इज इक्वल टू a, एंड आई हैव गॉट a एंड b का वैल्यू. सो माई क्वेश्चन विल बिकम 1 अपॉन एक्स प्लस 1 x plus 2 is equal to, देखो a का वैल्यू इज 1 अपॉन x plus 1 माइनस 1 अपॉन x plus 2. ठीक है, I've got this. All I have to do is just write it in integration. So this will become I is equal to integration from 1 to 2 1 upon x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ये कॉमन ब्रैकेट में डाल दिया और डी एक्स डाल दिया. एंड इफ आई इंटीग्रेटेड, देखो इंटीग्रेट करके मालूम पड़ता है कि इसका आंसर आएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 2 फ्रॉम 1 to 2. द एंटायर आंसर में आई विल पुट अपर लिमिट. सो दिस विल कम ln mod 3 minus ln mod 4. This is my upper limit, minus my lower limit will become ln mod 3 minus 1 plus 1, ln mod 2, sorry, ln mod 2 minus ln mod 3. ठीक है, so ये यहाँ पे हो गया. Now if I open the bracket, it will become ln 3 minus ln 4 minus ln 2 plus ln 3. So my answer become 2 ln 3. ln 4 को I can write ln 2 square minus ln 2, which will become 2 ln 3 minus 2 ln 2 minus ln 2, which will become 2 ln 3 minus 3 ln 2. तो you can write it as, इसको लिख सकते हैं ln 9 minus ln 8, which is ln mod of 9 by 8. You don't want to simplify depending on what the answer is given, that's up to you. तो मैं ऐसा कंपल्सरी नहीं कि तुमको करना है. नंबर्स इजी थे, तो आई जस्ट थॉट कि फॉर वंस वी कैन फिनिश द एंटायर सम. दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर वेर वी डिड बाय पार्शियल फ्रैक्शन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन, which according to me is a very important topic. Okay,
That's why I kept it before we finish a lot of types. अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना एक चीज़ याद रखो बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग द सम, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी तुम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज़ करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, व्हेन यू टेक समथिंग एज टी, उसको डेरिवेट करने के बाद माई लिमिट्स विल चेंज। इफ़ यू डोंट चेंज द लिमिट्स, देयर इज अ 99% चांस दैट यू विल गेट द रॉन्ग आंसर, बिकॉज तुम लोग रीसब्स्टिट्यूट नहीं करोगे एंड यू विल basically mess up with the calculation. I give a simple example. Say for example my question is I is equal to integration 0 to 2 pi under root of cos x into sin cube x, okay, into sin cube x. अब मुझे पता है कि cos x को t लेना है बिकॉज सबसे अजीब है, बट ये sin cube x है. So I'm going to write the question in this manner. Please pay attention again. Under root of cos x into sin square x into sin x dx. 0 to 2 pi under root of cos x 1 minus cos square x into sin x into dx. Let cos x is equal to 2 minus sin x dx is equal to dt. Therefore sin x dx is equal to minus dt. Okay. Therefore sin x dx is equal to minus dt. Now my limits will change, and how do they change? मेरा x का लिमिट है from 0 to 2 pi. ये देखो मैंने x को t ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने t ले लिया. अगर मैंने x की जगह 0 डाला, cos 0 will become 1. Okay, 0 to 2 pi नहीं है guys, it is 0 to pi by 2. अभी सोच रहा था कुछ तो गलत है. It's not 0 to pi, it is 0 to pi by 2. ठीक है, it is 0 to pi by 2. Let me change the question. यह है pi by 2, this is pi by 2, यह है pi by 2, यह है pi by 2. अब अगर मैंने cos x की जगह pi by 2 डाला, cos pi by 2 becomes 0. अब ये तो उल्टा हो गया. इट इज़ ऑलवेज छोटे वैल्यू से बड़ा वैल्यू. अब ये हो गया ना, टेंशन मत लो. आई टेल यू व्हाई दिस हैपन. आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन. मेरे पास साइन एक्स डी एक्स है, उसका वैल्यू है माइनस डी टी, तो मैंने डाल दिया माइनस डी टी. कॉस एक्स विल बिकम रूट एक्स इंटू, ऐसे लिखेंगे, रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस को बाहर ले लिया और डी टी ले लिया, फ्रॉम 1 to 0. नाउ अगर माइनस साइन है, you can eliminate the minus sign. This is the property that we'll be doing later in the day. To eliminate the minus sign, all you have to do is interchange the limits, so तुम लोग का minus sign गायब हो जाएगा. So this will become t raised to half 1 minus t square dt. It's a property. Now if I open the bracket, it will become t raised to half dt minus integration t raised to 5 by 2 dt, और ये है from 0 to 1. Now if I integrate this, t raised to half will become t raised to 3 by 2 upon 3 by 2 minus t raised to 7 by 2 upon 7 by 2 from 0 to 1. From 0 to 1. Now this will become, पूरे आंसर में अपर लिमिट, तो 1 raised to 3 by 2 minus 1 raised to 7 by 2, and second part तो 0 हो जाएगा. So this will become 2 by 3 minus 2 by 7, 14 minus 6
8 by 7. Did you guys understand this? Substitution, very important. Very important. There is a minus, we always interchange the limits. 8 by 21. Okay. 8 by 21. Next. Let's take a substitution का example. A good example, say for example, I is equal to integration 0 to pi by 4 sec square x upon 3 tan square x plus 4 tan x plus 1, ठीक है, dx. देख के मालूम पड़ रहा है tan x को t लेना है. So I'll take tan x is equal to t. Sec square x dx will become dt. ये हो गया x, ये हो गया t. X is from 0 to pi by 4. I'll put tan 0 is 0, tan pi by 4 is 1. My limits have changed. जैसे ही मेरा लिमिट चेंज हो गया, I will become 0 to 1 dt upon 3t square plus 4t plus 1. And guys, this is the perfect example of 1 upon quadratic, where the coefficient of x square must be 1. Since I've taken coefficient of x square as 1, I'll take 1 by 3 common outside. And since I take 1 by 3 outside, this will become integration 0 to 1 dt upon t square plus 4t by 3 plus 1 by 3. Have you guys understood this? Anybody has any doubts? So I expect you to solve the remaining sum. Okay. Now, substitution is, the question is dx upon 0 to pi by 2 dx upon 5 plus 4 cos x. It's a very clear example of 1 upon a sin x plus b cos x plus c. A sin x plus b cos x plus c. If you remember the type, the trigonometry type, we start with let tan x by 2 is equal to t. So x by 2 is equal to tan inverse t. X will become 2 tan inverse t. If I differentiate 2 upon 1 plus t square dt, here cos x is used. So cos x will become 1 minus t square upon 1 plus t square. And since I have used substitution here, my limits are going to change. How do they change? I'll write x. These are your original values. 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Yes. I'll write t here. In the step of let, you will first substitute your lower limit. So if I put x ka value as 0, tan 0 will become 0. If I put pi by 2, this will become tan pi by 4, which will become 1. So your answer will become I is equal to integration 0 to 1. I have dx ka value. Dx ka value is 2 upon 1 plus t square dt, 5 plus 4, 1 minus t square upon 1 plus t square. This is the type 1 upon a sin x plus b cos x plus c. Now if I simplify this, it will become 2 upon 5 plus 5t square plus 4 minus 4t square dt, which is integration 0 to 1 2 dt upon 5 plus 4 is 9, 9 plus t square. I'll take 2 outside, it will become 0 to 1 dt upon t square plus 3 square. This will become dt upon t square plus 3 square. This is the formula for x square plus a square, 1 upon x square plus a square. So 2 into 1 by a tan inverse x by a. Your lower limit is 0, your upper limit is 1. So this will become 2 by 3 tan inverse 1 by 3. पूरे आंसर में अपर लिमिट एंड पूरे आंसर में लोअर लिमिट डाल दिए तो ये 0 हो जाएगा.
So my answer is 2 by 3 tan inverse 1 by 3. And this is the substitution of a type a sin x plus b cos x plus c. A sin x 1 upon a sin x plus b cos x plus c. Okay. Now, if we take no. A very important sum. We have done this sum without limits. We have done the same sum without limits. Composite function. Composite function का मतलब क्या होता है? Function के अंदर function. Integration does not understand composite function. तो integration क्या बोलता है? I can't solve this. So what we do is, I'll take log x as t. So x will become e raised to t. And dx will become e raised to t dt. Substitution यूज किया, x ले लिया, t ले लिया, ठीक है. 0 to हाँ 1, actually 0 to pi by 2. 1 minute, let me check the question. It is 0 to pi by 2. ठीक है. Now if I put x का value as 0, तो log 0 is infinity, not defined. 0 to 1, log 1 is 0, log 0 is e raised to minus infinity होगा. Log 0 is e raised to minus infinity. इसको काम करते हैं, e raised to minus infinity. And if I put log pi by 2, it will become log of pi by 2. Okay. Sine of log x plus cos of log x, e raised to minus infinity and e raised to pi by 2. E raised to minus infinity is nothing but 0. Okay. I substitute here. So if I solve this further, इसका value आ गया dx and dt. I is equal to integration e raised to minus infinity and ln pi by 2. ये देखो क्या हो जाएगा. This will become dx का वैल्यू देखो क्या है, e raised to t sin t plus cos t dt. तो इसका आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? इट इज ऑफ द टाइप e raised to x f of x plus f dash x. What is the answer for e raised to x f of x plus f dash x? It is e raised to x f of x, ठीक है. It is e raised to minus infinity and ln pi by 2. Now if I put this as e raised to minus infinity, I still feel that there is limits का question wrong. I could have taken it as 0 to 1. If I take it as 0 to 1, 0 to 0 हो जाएगा फिर. Log infinity is, log of 0 is, ठीक है. Wait, let me check the question. I think there's some question wrong.
see, continue with this. So it will become e raised to ln pi by 2 sin ln pi by 2. Second part will become 0. So this will become, ये हो जाएगा pi by 2 sin ln pi by 2. This is your answer. ठीक है. You can do it by integration by parts also. That depends on you. If you want to solve by integration by parts, you can solve by integration by parts. Okay. So we have tried solving each and every type. Okay. So we have finished solving each and everything that is required. Now there are some functions called as the mod functions. Okay. Something called as a mod function. Now, for example, imagine a question is this: I is equal to integration 0 to 1 mod of 5x minus 3 dx. Now, let me split this question. Step number 1, mod के अंदर जो भी दिया है सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करो. स्टेप नंबर 2, तुमको x का वैल्यू मिलेगा. x का वैल्यू है 3 से 3/5 सॉरी, which is lying between here. So I am going to split the limit. See how I am going to split the limit. मेरा लिमिट ये था, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. ये मेरा लिमिट था. मेरा लिमिट है फ्रॉम 0 to 1. यहां पे कट हो गया 3/5. ये छोटा वैल्यू है. दिस इज स्मॉलर साइड, स्मॉलर वैल्यू, बिकॉज 0 to 3/5 इज ऑलवेज लेस देन 3/5 to 1. यहां पे नेगेटिव वैल्यू है. नेगेटिव वैल्यू मतलब देखो ऐसा है, माइनस 5x minus 3 dx प्लस 5x minus 3 dx, और इसका लिमिट रहेगा 0 to 3/5 और इसका रहेगा 3/5 to 1. Have you guys understood this? क्यों? 0 to 3/5, the maximum value is 3/5. 3/5 to 1 में maximum value क्या है? 1. तो 3/5 is greater or 1 is greater? तो इसलिए इसको पॉजिटिव वैल्यू मिला ना, और इसको नेगेटिव वैल्यू मिला. If I have 0 to 10 chocolates, I give you 0 to 5 chocolates, and I have 6 to 10 chocolates. Which side has more chocolates? 6 to 10, right? 0 to 1 में this is a smaller side because 3/5 is always going to be less than 1. So इसको नेगेटिव मॉड वैल्यू आएगा और इसको पॉजिटिव आएगा. ओके, क्या नहीं समझा? अरे मॉड इज प्लस माइनस नो. मॉड ऑफ x इज आइदर नेगेटिव x और पॉजिटिव x. इसमें बड़ा वैल्यू कौन सा है? तो वो बड़े लिमिट के साथ जाएगा. Now, if you want, you can eliminate it or you can just open the bracket. So this will become, if I solve this, this will become 3 minus 5x from 0 to 3/5 dx plus 3/5 to 1 5x minus 3 dx. Now you can integrate it normally. देखो कैसे करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx माइनस 5 इंटीग्रेशन x dx. इसका लिमिट साथ में ले लो 0 से 3/5 तक, प्लस 5 इंटीग्रेशन x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन 1 dx 3/5 से 1 तक. 3x minus 5x square by 2 0 to 3/5 plus
5x square by 2 minus 3x, 3 by 5 से 1. Now if I substitute, this will become 3 into 3 by 5 minus 5 by 2, 3 by 5 the whole square. अब देखो सेकेंड पार्ट जीरो हो जाएगा बिकॉज एक्स में जीरो डाल दिया, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सॉल्व, प्लस सेकेंड पार्ट ये हो जाएगा 5 बाई 2 माइनस 3 माइनस 5 बाई 2 3 बाई 5 द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 बाई 5. ठीक है, पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? एनी डाउट्स हियर? इसको ऐसे लिख दो सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरे आंसर में अपर लिमिट माइनस पूरे आंसर में लोअर लिमिट. नाउ इफ आई वांट आई कैन ओपन द ब्रैकेट, दिस विल बिकम 9/5 माइनस, ठीक है, 5 9 5 45 अपॉन 50. Okay, you can reduce this if you want. I'm not doing it because कुछ ना कुछ तो कैंसिल होने का चांस है. Plus this will become 5 minus 6 will become minus half. Okay, 5 minus 6 ये हो जाएगा minus. This will become again 3 times 3 square is 9 times 5 is 45 upon 50. देखो ध्यान से minus 45 minus 45, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है. ओके, प्लस 9/5. ये देखो, now if I add this, this will become 9/5 plus 9/5. It will become 18/5 minus 45/5, 45/50, 45/50 will become minus 90/50. Minus 90/50 is nothing but 9/5. Okay, minus half. 18/5 minus 9/5 will become 9/5 minus half, which will become 18 minus 5. 18 minus 5, which is 13/10. Do you guys understand this? This is your answer where the question was mod. So first step of mod, जो भी mod के अंदर है उसको equal to 0 करो. अगर स्प्लिट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट. हमेशा स्प्लिट होता है, यू गेट अ वैल्यू. जहाँ पे ब्रेक हो रहा है ये लोअर पार्ट रहता है तो माइनस के साथ डील करेगा, ये अपर पार्ट है जो पॉजिटिव के साथ डील करेगा. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद डेफिनेट, नाउ डेफिनेट इज द इजी पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ व्हाई इज डेफिनेट इजी पार्ट? बिकॉज डेफिनेट का सिंपल सेट ऑफ रूल्स है. डेफिनेट का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, अगर मेरा क्वेश्चन है a to b f of x dx, I can replace the variable with any variable. मेरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin x. नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin t. नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin phi. नेक्स्ट मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin y dy. Because definite integration does not care about your variable. Your answer will be a constant. And since your answer is going to be a constant, you take any variable, does not make a difference. तो log x के जगह अगर log t भी लिख दिया मैंने तो no one cares because definite integration का first rule है you can replace any variable with any other variable. So this is the first rule. Second rule, minus a to b f of x dx can be written as b to a f of x dx. You have the luxury कि अगर तुमने लिमिट्स इंटरचेंज किया, अगर लिमिट इंटरचेंज किया तो बाहर माइनस साइन आ जाएगा. अगर बाहर माइनस साइन है और लिमिट इंटरचेंज किया तो माइनस साइन गायब हो जाएगा. अभी क्यों होता है समझो. आई एक्सप्लेन दिस टू यू. ओके, आई एक्सप्लेन दिस टू यू. देखो ध्यान से समझो, मेरा
एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, समझो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ए। इसके बाहर माइनस साइन है, अगर इसके बाहर माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, माइनस एन प्लस। ठीक है, अब इसका आंसर देखो क्या रहेगा, इसका आंसर अगर मैं सॉल्व किया तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स का आंसर विल बिकम एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। क्या दोनों का आंसर सेम है? इट्स द सेम आंसर। सो दैट इज वाई यू हैव द लग्जरी की बाहर माइनस है ना, लिमिट्स इंटरचेंज कर दो, तुम लोगों का आंसर सेम आएगा। हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? एनीबॉडी हैव एनी डाउट्स? इट्स ईजियर फॉर यू, इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, and these are good properties, these are important properties. Integration a to a f of x dx will become 0. अगर ऊपर का लिमिट और नीचे का लिमिट सेम है, तुमको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, योर आंसर विल बी 0, बिकॉज पूरे आंसर में ऊपर का वैल्यू माइनस पूरे आंसर में सेम वैल्यू डालेंगे तो मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी 0. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 0 to a f of x dx, देखो ध्यान से सुनो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f of a माइनस एक्स dx. अब यहाँ से तुम लोग का दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होता है. 0 to a f of x dx इज नथिंग बट 0 to a f of a माइनस एक्स. इसका मतलब क्या होता है, सुनो मेरा बात ध्यान से. I'll teach you this with the help of an example. I is equal to integration 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x dx. This is my question. नीचे 0 है, ऊपर a. स्टेप नंबर 1, जो भी मेरा क्वेश्चन दिया है आई विल पुट दिस एज इक्वेशन 1. अंडरस्टैंड दिस? जो भी क्वेश्चन है 0 है और ऊपर a है. स्टेप नंबर 2, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आई विल पुट अपर लिमिट माइनस एक्स. आई रिपीट अगेन, जहाँ पे भी x है वहाँ पे आई विल पुट अपर लिमिट माइनस एक्स. जहाँ पे भी x है वहाँ पे आई विल पुट अपर लिमिट है माइनस एक्स, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? अगेन आई एम टेलिंग यू, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आई पुट अपर लिमिट माइनस एक्स. सी आई कैन पुट लोअर लिमिट बिकॉज लोअर लिमिट क्या है, 0. सो आई पुट अपर लिमिट माइनस एक्स. Now since I put upper limit minus x, my question will become I is equal to 0 to pi by 2 cos x upon cos x plus sin x dx. This is my equation 2. This is my equation 2. Next, adding 1 and 2. Adding 1 and 2. So left hand side will become I plus I is equal to integration 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x dx plus integration 0 to pi by 2 cos x upon sin x plus cos x dx, which is equal to integration 0 to pi by 2 sin x plus cos x upon sin x plus cos x dx. ये कैंसिल हो जाएगा. 0 to pi by 2 1 dx, 2i will become pi by 2, I will become pi by 4. My answer for 0 to a will always be
b minus a by 2. I'm giving the shortcut. The answer will become upper limit minus lower limit by 2, even when before you start solving. Now let's check if the answer is correct. What is the upper limit? Pi by 2 minus 0/2. क्या आएगा आंसर? Pi by 4. That's the answer. Always the answer is going to be this when it is 0 to a. Now if I take this question, see, these are all verbal questions. If I take this question, I is equal to integration 0 to pi by 4 ln tan x. I'll put this as equation 1. 0 to pi by 4 ln tan of pi by 2. Sorry, this is not pi by 4. This is pi by 2. Pi by 2, pi by 2. Pi by 2 minus x dx, which will become integration 0 to pi by 2 ln cot x dx. This is equation 2. Guys, I am doing the same steps again, adding 1 and 2. Left hand side will become 2y is equal to integration 0 to pi by 2 ln tan x dx plus integration 0 to pi by 2 ln cot x dx. Ln a plus ln b will give you ln ab. So ln of tan x into cot x. Guys, what is tan x into cot x? 1. And what is ln 1? 0. So if I do pi by 2 minus 0/2, I'll get the answer as pi by 4. But since it's tan, I know that my value, if I multiply, tan and cot gets cancelled. Sin and cos did not get cancelled, but tan and cot got cancelled. Have you guys understood this? So you have to be very careful. Majority of the times b minus a by 2 will work, but tan और cot आ गया, cancel हो जाएगा, ln 1 becomes 0. Have you guys understood this? Whatever gets cancelled, no? Cosecant sin आ गया तो cancel हो जाएगा, depending on what the question is given. Complementary angles is sin and cos, tan and cot. अब cosecant sec, but cosecant sec will not cancel each other out. Sin and cos will not cancel each other out. Only tan and cot gets cancelled, right? For a complementary angle, only those two angles get cancelled. और कोई angle cancel नहीं होएगा. अब if this is for 0 to a, देखो 0 to a, and I am just going to run through this type. कुछ नहीं किया, इसका सम में क्या किया, जो भी क्वेश्चन दिया उसको इक्वेशन 1 डाला, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स डाला, वो चेंज हो गया, उसको इक्वेशन 2 डाला, ऐड कर दिया, इट गॉट कैंसल्ड. क्वेश्चन को इक्वेशन 1 डाला, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन 2 हो गया, ऐड कर दिया, डायरेक्ट बिफोर इंटीग्रेटिंग कैंसिल हो गया, बिकॉज ln 1 बिकम्स 0. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सी दिस प्रॉपर्टी दैट वी डिड, दिस प्रॉपर्टी, ओके, 0 to a. अब इसको ना a to b f of x dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x. पहले मैंने सिर्फ अपर लिमिट लिया था, यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ऐड कर रहे हैं. कैन यू टेल मी व्हाई? एक्चुअली पहले में भी हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऐड किया था, और नीचे 0 था, यहाँ पे 0 नहीं है. बोथ द टाइप्स आर द सेम. वहाँ पे 0 था तो वी नेवर राइट 0 प्लस a माइनस एक्स, राइट? यहाँ पे a और b दिया है तो a प्लस b माइनस एक्स. सेम एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक, सेम एग्जाम्पल. Same example I'm taking, guys, so that it becomes easier for you to understand. जो भी मेरा क्वेश्चन दिया है उसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, जो भी मेरा क्वेश्चन दिया है उसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया. जैसे मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया,
सेकेंड में मैंने क्या किया, मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड कर दिया. सो इट बिकम साइन ऑफ pi by 6 plus pi by 3 minus x the whole upon sine of pi by 6 plus pi by 3 minus x plus cos of pi by 6 excuse me. So now if I solve this, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. I is equal to integration 0 to pi by 2 cos x upon cos x plus sin x dx. This is the equation 2, adding 1 and 2. 2i is equal to 0 to pi by 2. ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1. तो अगर मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो दिस विल बिकम sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x. एंड 0 to pi by 2 नहीं है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने. pi by 6 pi by 3 pi by 6 pi by 3 कैंसिल हो गया. 2i will become x pi by 6 pi by 3. 2i will become pi by 3 minus pi by 6. Therefore, two I will become pi by 3 minus pi by 60 minus 30 will give you pi by 6. I will become pi by 12. Do you guys understand this? B minus A by 2. Same. B minus A by 2. सेम थिंग वी हैव डन फॉर बोथ द टाइप्स. सबसे ज़्यादा बार आने वाला टाइप है, कुछ नहीं करना है. ये सेम क्वेश्चन रूट में आएगा, सेम क्वेश्चन का मेन रूट, सेम क्वेश्चन ई रेज टू साइन एक्स अपॉन ई रेज टू साइन एक्स प्लस ई रेज टू कॉस एक्स. सेम आंसर इफ आई टेक लॉग वाला ले लिया, लॉग ऑफ साइन एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स ले लिया. लॉग ऑफ साइन एक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, वो हम लोग बाद में करने वाले. But these are the same, we are going round and round and round in circles. So how we proceed with these kind of sums is very important. Did you guys understand this? Anybody has any doubts? Chalo, start writing.